मैं दीपक पांडे आज आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स एक बायोमॉलिक्यूल्स कहलाता है जो हर ह्यूमन बॉडीज़ में पाया जाता है। इसकी पूरी डिटेल्स आज आपको मैं समझाता हूं। अधिकतर हमारे पास ये क्वेश्चन होता है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हम कहीं पर भी जब कोई भी मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डॉक्टर बताता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है क्या और कहाँ से बनता है और ये कितने प्रकार, हाउ मनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और ग्लूकोज फ्रक्टोज इस सब में टूटना। तो आइए अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में कार्बोहाइड्रेट्स मीन कहलाता था कार्बन प्लस वाटर, इनका कॉम्बिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता था। इसका फार्मूला बहुत पुराना है, ये था CX प्लस वाई H2O इज इक्वल टू CX H2O Y. It is called carbohydrates in an old definition, but after some time, during the many practicals, it is decided that it is a not combination of carbon and water. It is a actually combination of aldehydes and ketone groups. That is why it is called carbohydrates. Then the new definition, according to the new definition, the general formula of carbohydrates is called CH2O whole to the N, where N is the number of 1, 2, 3 and 4 and so on. Now after all that, the base of carbohydrates is called monosaccharide. Okay, monosaccharides. Mono means one, the unit of one. Saccharides means sweet. The another name of carbohydrates is also sweets. Now then we learn to what is the classification of carbohydrates. Carbohydrates classification is this: monosaccharide, and another is disaccharide, and the last is polysaccharide. Okay, monosaccharide, its example is that glucose and fructose. Disaccharides, second, another classification is trisaccharide and tetrasaccharide. All these saccharides, disaccharide, trisaccharides and tetrasaccharides, it's come under into the oligosaccharides. Polysaccharides is also classified in another two components. It's called homopolysaccharides and heteropolysaccharides. So now we start monosaccharides. Monosaccharides. The general formula of monosaccharides is CH2ON. Okay. Monosaccharides is totally based on aldose and ketose.
Aldose means a group of CHO. Ketose means the group of CO. Aldose और कीटोस व्हेन इसको डिफाइन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जब किसी भी से कार्बन चेन में OH ग्रुप ऐड होता है तो उसको हम एल्डोस कहते हैं, और किसी कार्बन चेन में जब CO ग्रुप ऐड होता है तो उसको हम कीटोस कहते हैं। एल्डोस कीटोस, द फार्मूला ऑफ the example of aldose is that glucose. Ketose formula is fructose. Okay, we can understand why the formula is that HC double bond O C OH H H. Okay, now you can see that आप देख सकते हैं कि here is the functional group of CHO. It is called glyceraldehyde. The ketose formula is that HCOH H C double bond O COH H and H. It is a formula of ketose. Now another thing is that asymmetric carbon. Asymmetric carbon means that in any chain a carbon which are not follow the way of order of that chain, यानी ऐसा कोई कार्बन जो किसी भी चेन में एक ऑर्डर को फॉलो नहीं करता उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट द कार्बन हैज़ कंसिस्ट टेट्रावैलेंसी. Okay, now in these tetravalencies when carbon is attached to another groups like that OH H CO, it is just like an example, and H other functional group से जब कार्बन ऐड होता है जुड़ा होता है तो उसको हम asymmetric कार्बन कहते हैं. Due to this asymmetric carbon, carbohydrates represent the optical isomers. It is very important properties of carbohydrates which is decided in our body कि glucose or fructose and maltose starch like that. Now I am explaining that. Optical isomers, we can say that when polarized light passed in any aqua solution, then it rotate and give some new images. It's called optical isomers. These images are D and L. Thanks.